element of IoT security. So authentication, access control, data security, non-repudiation and availability. These are the key element of IoT security. Authentication सबसे इम्पोर्टेंट एंड बेसिक एंड प्रिमिटिव पार्ट है की एलिमेंट का ऑथेंटिकेशन। जो भी IoT डिवाइस दैट इज स्मार्ट डिवाइस होती है, जब भी दोनों डिवाइस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन चल रहा होता है तो डेटा ट्रांसमिशन प्रोसेस जो भी कैरी आउट हो रहा है, ये दोनों डिवाइस सबसे पहले क्या चेक करती है, ये दोनों सबसे पहले वैलिड होनी चाहिए, दैट इज ऑथेंटिकेशन डिवाइस होनी चाहिए। जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का, बहुत ही सेंसिटिव या क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, तो इस इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होना है, इसी अटैकर के हाथ नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हम ऑथेंटिकेशन की नीड होती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन की नीड होती है, मतलब आप समझ में आया आपको कि क्या होता है, दोनों डिवाइस वैलिड होनी चाहिए। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर माना जाता है सोर्स एंटिटी। सोर्स एंटिटी डिवाइस का ऑथेंटिकेट करना जरूरी होता है, मतलब सोर्स एंटिटी। रियल लाइफ का एग्जांपल अगर दिया जाए तो अभी आप जानते ही हो कि कोरोना वायरस चल रहा है, ओके, कोविड-19। अब जब सपोज कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, ओके, तो आप आई डोंट थिंक कि कोई भी वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में जो भी इंफॉर्मेशन आया, जो भी कोरोना की अपडेट आई है, जो भी न्यूज आई, तो वो इतना बिलीव नहीं करेगा उस इंफॉर्मेशन पे। सो इसके लिए एक क्या होता है, एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की। जब आप वहां पे जाकर उस इंफॉर्मेशन को देखते हो कि हाँ ये अपडेट है, ये रिगार्डिंग कोरोना इंफॉर्मेशन है, तो आप फुल्ली ट्रस्ट होता है आपको कि हाँ ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो राइट ही है, राइट, ना कि क्योंकि व्हाट्सएप पे जो भी इन्फॉर्मेशन आती है जरूरी नहीं कि वो हमेशा राइट हो, कभी कभी वो अनवांटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो फॉरवर्ड हो जाती है, राइट। सो यहाँ पे हो जाती है, राइट। सो तो वहां पर एक कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट कम्युनिकेशन और ट्रस्ट डेटा ट्रांसमिशन। बेसिकली जब हम किसी यूजर डिवाइस को ऑथेंटिक करते हैं, किसी भी डेटा और यूजर को हम ऑथेंटिकेट करते हैं, करना होता है या करते हैं, तो वी रिक्वायर व्हाट, क्रेडिशनल इंफॉर्मेशन। अब क्रेडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब यूजर को एंट्री देना हो तो क्या होता है, यूजर जब यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालता है तो बैकएंड में उसका डेटा रहता है। अगर वो दोनों मैच करते हैं, इसका मतलब वो वैलिड यूजर है या वो वैलिड डिवाइस है। ओके, सो आई होप कि आप समझ गए हो कि ऑथेंटिकेशन मींस व्हाट, कि वैलिड डिवाइस एंड वैलिड यूजर। देन एक्सेस कंट्रोल। अब मैं आपको एक्सेस कंट्रोल का एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक CEO है और एक न्यू फ्रेशर एम्प्लॉई है, तो जो न्यू CEO को जितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का लिमिट होगी उतनी ही लिमिट एक न्यू फ्रेशर को नहीं हो सकती, राइट। व्हाई? क्योंकि CEO मीन्स यू नो वेरी वेल नाउ, अभी आप समझ सकते हो CEO की क्या पोजीशन होती है। तो वो जितनी भी हाईली इंफॉर्मेशन है, सिक्योर इंफॉर्मेशन है, वो एक्सेस कर सकता है, लेकिन इन केस फ्रेशर या एम्प्लॉयज नहीं कर सकते। अगर दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो आप स्टूडेंट्स हो, जब आपको कोई आपकी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी होती है यूनिवर्सिटी लेवल में, आपका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो या आपको अपडेट करना हो, तो आप कहाँ जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर के पास। आप खुद से अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं? नो। ऐसे ही IoT में डिवाइस होती है जिसमें से एक कंट्रोलर होता है, एक डिवाइस होती है जिसको हाईली सिक्योर, मतलब वो एक्सेस कंट्रोल कर सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट वो हाईली खुद के पास रख सकता है और जितनी इंफॉर्मेशन अदर डिवाइस को सेंड करना है बस वो उतना ही वर्क करेगा, ये नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन वो सबको स्प्रेड करेगा, राइट। देन डेटा सिक्योरिटी। दो डिवाइस के बीच जब कम्युनिकेशन होता है, ओके, वो सिक्योर वे में होना चाहिए, सेंडर टू रिसीवर पहुंचाने के लिए। आप देखो, जब अगर दो डिवाइस कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑफकोर्स अटैकर भी बीच में इंटरमीडिएट कर सकता है, राइट। तो अटैकर वो दोनों डिवाइस में, अभी सपोज सेंडर कोई रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ओके, और रिसीवर तक, और वो रिसीवर के पहुंचने से पहले अटैकर ने वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लिया सपोज, सो क्या होगा उसमें, तो वो इंफॉर्मेशन अपने वे में उसको फॉरवर्ड कर सकता है। रिसीवर को तो नहीं पता होगा ना कि ये इंफॉर्मेशन सेंडर की नहीं सेंड की, वो तो यही सोचेगा ना ये सेंडर के पास से आई ये इंफॉर्मेशन, राइट। सो इससे बचने के लिए क्या होता है, इनक्रिप्ट फॉर्म, मतलब
प्लेन टेक्स्ट को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोई भी जो एकदम सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है जो ए सेंडर टू रिसीवर को पहुंचाना है, उसको हम इनक्रिप्ट करते हैं। अब इनक्रिप्ट करते हैं मतलब कुछ ऐसे वर्डिंग में लिखते हैं जो सेंडर और रिसीवर ही समझ सकते हैं। अगर अटैकर ने उस इन्फॉर्मेशन को हैक भी किया या उसको रिसीव भी किया तो अटैकर अनेबल टू रीड दिस इन्फॉर्मेशन। आई बात समझ में? दैट इज डेटा सिक्योरिटी। देन नॉन रिप्यूडिएशन। अब इसमें क्या होता है, सेंडर कांट डिनाई और रिसीवर आल्सो कांट डिनाई। मतलब सेंडर के पास, अगर सेंडर ने रिसीवर को इन्फॉर्मेशन सेंड की, राइट, तो रिसीवर ये नहीं कह सकता कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। व्हाई? बिकॉज रिसीवर के पास सेंडर का सेंड मैसेज का बैकअप होगा, और रिसीवर ने फॉरवर्ड की तो सेंडर ये नहीं कह सकता कि आई डिडंट गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसीवर। दैट इज आल्सो, उसके पास एक बैकअप होगा। तो दैट इज अ नॉन रिप्यूडिएशन। देन अवेलेबिलिटी। अगर पर्टिकुलर रिसोर्स है, ओके, उसे सपोज कि एक पर्टिकुलर रिसोर्स है और एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आर की नीड है, एंड अगर आपका सिस्टम उस आर को प्रोवाइड कर रहा है अवेलेबिलिटी, तो दैट इज मीन हाई अवेलेबिलिटी। एंड अगर वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है पर्टिकुलर रिसोर्स को आर, दैट इज नॉट हाई अवेलेबिलिटी। सो IoT सिस्टम के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज IoT में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो भी शेयरिंग होगा डेटा, ओके, वो रियल टाइम में शेयरिंग होगा। जो भी स्टोरिंग होगा डेटा, वो रियल टाइम में स्टोरिंग होगा। सो इन सब के बीच जो भी डिवाइस किसी भी रिसोर्स की मांग करता है तो अवेलेबल होना चाहिए एट ए टाइम, एंड उसमें जो भी डिले, मतलब डिले फैक्टर इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अभी अगर आपका हाई अवेलेबिलिटी IoT का एक कोई एग्जांपल दूं तो सपोज कंट्रोलर जब भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है वाटर मोटर को कि वाटर की रिक्वायर है, तो उसमें वाटर मतलब रिसोर्स वाटर होना ही चाहिए प्लान को सेंड करने के लिए। इट्स कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे आई डोंट हैव वाटर देन आई कांट पुट वाटर इन प्लांट, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एलिमेंट्स ऑफ IoT सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होना चाहिए, दोनों डिवाइस वैलिड होनी चाहिए एक दूसरे से। एक्सेस कंट्रोल में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक डिवाइस को हाई एक्सेस कंट्रोल की राइट्स होता है, राइट, जो सिक्योर इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी में क्या होगा, आई ऑलरेडी सेड अबाउट डेटा सिक्योरिटी में क्या होता है, वो इनक्रिप्ट फॉर्म में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर दे, जैसे कि अटैकर उसको अटैक ना कर पाए, हैक ना कर पाए। नॉन रिप्यूडिएशन में डिनायल ऑफ सेंडर, डिनायल ऑफ रिसीवर। अवेलेबिलिटी आई ऑलरेडी नाउ एक्सप्लेन यू। So after this, we will see Pi camera with the help of Raspberry Pi. Okay, so ये मैं आपको with एक clip through show करूँ। Yes, we have a Raspberry Pi standard camera module version 1.3, this one, and then we have a Raspberry Pi 4. Okay, and then we have a little type C USB cable which will be used in order to power up the Raspberry Pi 4. So basically we will be learning first how we can connect a Raspberry Pi camera module with a Raspberry Pi 4 properly. Okay, so if you look at Raspberry Pi camera module, then you might realize that it is very sensitive to electrostatic discharge. So when you buy a Raspberry Pi 4 camera module, then you have to make sure that you use it gently, take a proper care for electrostatic charges, right? So once you take care of that part, then when you take out this camera module from the standard packaging boxes, what you will see is there is a little CMOS camera sensor, right? And the interesting part to look for us in terms of connectivity is its flat ribbon cable. Okay, so this is the flat ribbon cable that we will going to use in order to connect to Raspberry Pi 4, right? So this is how the CSI cable will look like, right? So if we look carefully, then one end of the CSI cable will look into the blue
color, and the other end of the flat ribbon cable is into the silver notches, right? So when it comes to connecting this camera module using this flat ribbon cable to Raspberry Pi, then we have to look for ZIP 15 CSI connector, and this is the one zip connector I'm just talking about, right? So by default, let me just show you a little bit properly. So by default, this ZIP 15 connector is pushed down, right? So we have to take the two end gently and stretch it upward, and you see it creates a little cavity where you can plug in this flat ribbon cable, right? And the way it's going to fit into this CSI connector is something like this. We can take this camera module and make sure the blue label, blue color part will be toward the 3.5 audio jack, okay, and plug in that way so that it can fit properly into CSI connector. Okay, once it is properly fit in, take the other hand and press the connector. Okay, and it's now properly fit in. So make sure they touch, and in the end it will look like this. So this end will be the silver color strip, and the other end toward this audio jack will be the blue flat cable, right? Blue color flat ribbon cable. Okay, that's how you're gonna connect to the Raspberry Pi 4. And now, because sometimes it is possible that you connect this flat ribbon cable other way around, that means in opposite, so make sure you do camera connections when your Raspberry Pi is powered off. So make sure you are not connected to the power cable, so that you will stay away from the damage. Once you make sure the connection is proper between your camera module and Raspberry Pi, finally then you will go and connect your power cable, means the Type-C USB cable, and you see in the end we powered up the Raspberry Pi 4. This is how we will going to connect Raspberry Pi camera module with Raspberry Pi 4 using CSI connector and flat ribbon cable. So the first thing before we do anything with the Raspberry Pi, we make sure that we have up to date our operating system. So sudo apt-get update. This will going to install the latest kernel on Raspberry Pi 4 that we are using. I always like to keep my Raspberry Pi up to date, especially the kernel. Then sudo apt-get upgrade. So this will install the latest kernel that we have. Okay, and it says now it is up to date. Then the very important thing when we are using Raspberry Pi camera module is we have to enable the camera interface on Raspberry Pi. Now to enable the camera interface, we have to run a command sudo raspi config. So this command will give us the advanced options. So there we have to scroll down and select interfacing options, and there we select the camera, use up and down arrow key and hit enter, select the camera, and it asks us, would you like the camera interface to be enabled? And yes, we want to enable, so just hit enter, and then it says the camera interface is enabled, and then say okay, so hit enter, and then use a tab button and on a laptop, and then select the finish. Okay, till the finish gets selected, and then hit enter. And this is how we will going to select, this is how we will going to enable the camera interface on our Raspberry Pi 4. The next step is to apply the changes we have made. Sudo reboot. Reboot is the command to restart the Raspberry Pi so that the changes that we have made will be applied. Okay, so let me close this, everything. Okay, and then I have just bitwise SSH client. Okay, and it might take a couple of seconds to reconnect the Raspberry Pi. I hope it will come up quickly. And okay, it says accept
for this session, and you will see the black screen will pop up. Okay, it doesn't come, so just click on new terminal console. It will give us the new terminal console, and then new SFTP window. We need it later, so just open it up and go to the black screen. I would like to run a clear command now. To capture the image using Raspberry Pi camera module, we have to use a command, raspi still. So basically the way you use this camera module is basically to access this camera over Raspberry Pi is by using a command, and raspi still is one of the command to access the camera modules on Raspberry Pi. So we will write a raspi still and then -o to output. We want to capture the image, so I would give it a name, like let's say Umesh, it's my name, .jpeg, and hit enter. And this basically will capture the image using my Raspberry Pi camera connected to Raspberry Pi. And make sure that I'm running this command in my home directory. So I run ls command to list the directories and files, and you see umesh.jpg file is created, right? So this is the image that we have captured. Now to see this image, I want to take you to the SFTP terminal, and you see here in SFTP in the left right side there is a Raspberry Pi, so I can refresh and you see this umesh.jpg file. I can move it to my desktop on my laptop in the left side of SFTP terminal, and you see right now umesh.jpg, and you see here the Umesh, there's one image that came. So I will double click and open the file, and you can see this is me recording the video, and this is how we will going to capture the image, right? So let me close this, go back to the Raspberry Pi terminal, and now this is how you capture the image. Now when it comes to capture the video, then you have to use a command, raspi width for video, -o to output. What we want to output is the video, right? So I would going to say my video dot h264. So dot h264 is the AVC, that means advanced video coding. That is, type of the video that you will going to record out of this Raspberry Pi camera module, right? So that's the extension. Make sure it's a AVC, that is what it means, like advanced video coding, right? Codec or coding or something like that. So hit enter, and it takes maybe a couple of seconds, and it will take 5 seconds of video, I guess. So just run ls command, and you see where is my video. So this is my video.h.264. Now to watch the video, I have to do the same thing. I have to go back to my SFTP terminal, refresh my remote files on Raspberry Pi, and here if I scroll down, you see here is my video.h264. so I can just drag and drop it to my laptop, means the desktop basically, and you see here is the file, right? So once the transfer is completed, I can minimize this, and if I try to open this in the Windows Media Player, it won't work. Okay, so I rather close this. To watch the video that you have recorded, you have to right click on a file and open with a Power Media Player. So you don't need to install this. It comes installed by default on Windows machine, and you can see the video, right? It's my video recording this video, right? So let me run once again. The quality is not good, not bad. I'm using a Raspberry Pi camera version 1.3, and this is expected. So I hope you will find this video educational and entertaining. Maybe in the next video or something, I would going to make a little more advanced, and we'll see us into the next lesson. Bye bye for now.